संतोष राव इस समय जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ रिसर्च एंड पार्टनर मैनहट्टन वेंचर्स के। संतोष, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद ET नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। जो जैसा डिम्पी बता रहे थे अभी, एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट नैस्डैक दिखा रहा है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वर्ल्ड ओवर, ताइवान सेमीकंडक्टर स्टॉक, चाइनीज अलीबाबाज ऑफ द वर्ल्ड सब रैली कर रहे हैं। हाई ग्रोथ स्टॉक्स लग रहा है बॉटम बनाया है। ये इसमें फेड की कमेंट्री कहाँ फिट बैठती है और इस ग्लोबल कंफर्ट, ग्लोबल रैली में फेड का कहाँ तक रोल है? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी अभी तक जो रैली हो रही है, इट्स बीइंग लेड बाय काइंड ऑफ स्पेकुलेटिव टेक, यानी नॉन प्रॉफिट टेक्स दैट वर बीटन डाउन। जो कंपनीज जो बीटन डाउन थे लास्ट ईयर, दे लेड द रैली। इवन क्रिप्टोज आर, बिटकॉइंस आर अप, सो ऑल द स्पेकुलेटिव टेक इज अप। तो ज्यादा कुछ यू कैन नॉट इन्फर टू मच, बट एक चीज तो ठीक है, एक चीज तो साबित हो गई है कि the Fed has acknowledged that inflation has probably peaked. He's used this disinflation quite a few times, which was a good sign. So I think, and another thing he said is he sees a path to 2% for federal funds rate without high unemployment. So I think that's a good sign that he thinks that maybe we are towards the end than the beginning. So that was a ray of hope. So growth stocks will rally based on that. But अभी भी देखिए, fundamentals, companies के fundamentals अभी भी weak है। Earnings आने वाले हैं अभी, ये तो fourth quarter थे, but आगे जाके I think you're going to see the lag effect of all the raises. So you're going to see some earnings depression. So the multiples have contracted. अभी तो 19 हो गया है, actually 18 point something, and the Nasdaq बहुत ही high हो गया है based on the fact that earnings are going to come down quite a bit. So I think you're going to see some pullback, but I think the worst may be behind us. So people positioning for the future, which is what the stock market is, I think Shahid, it's a good encouraging sign that he was not very hawkish today. That was the best thing today. ये बात मैंने भी ऑब्जर्व की कि अपने ट्रेडिशनल हॉकिश स्टांस को उन्होंने थोड़ा सा डिपार्चर देखा। बट ये जो अर्निंग्स आ रही हैं, अर्निंग्स की क्वालिटी, जैसे हम यहाँ पे बात करते रहते हैं, लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के रिसेशन है। एक तो इकोनॉमिक रिसेशन, जिसके साइंस अर्ली दिख रहे हैं डेटा में। दूसरा है स्टॉक मार्केट रिसेशन, जो हम ऑलरेडी देख के रिबाउंड आ गया यूएस मार्केट्स में। और तीसरा है अर्निंग रिसेशन। क्या अर्निंग रिसेशन यूएस कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अभी देखना बाकी है? आपको लगता है अर्निंग्स में अच्छे डैमेज हो सकते हैं यहाँ से भी आगे आने वाली अर्निंग्स में? हाँ, बिल्कुल होने वाला है अभी। आई डोंट थिंक वी हैव सीन इट। बोलते हैं कि लैग इफेक्ट ऑफ रेट इंक्रीजेस इज 9 to 12 months, फेल्ट 9 to 12 months। द फर्स्ट रेट इंक्रीज का अभी 9 months हुए हैं, 9 या 12 months। वी आर एट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज। तो अभी ये जो बाकी जो रेट्स इंक्रीज हुए हैं, उसका इफेक्ट अभी फील होने वाला है आगे जाके, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। तो अभी वी हैवंट सीन द फुल इम्पैक्ट ऑफ द हाई रेट्स येट, एंड ये जो ले ऑफ्स एंड ऑल दैट विल come through later on, and that's a big concern for him right now. Goods inflation नीचे आ गया है, उनको फिक्र है services inflation की, which is the wage inflation. So I think अगर वो कम हुआ तो he'll be happy, but right now he's worried कि there is disinflation, but the forces are not haven't gone yet. अभी है काफी। And China की आप जो बात कर रहे हैं, वो तो because China is opened up and there's a bounce back because of that. So it's very particular to China. And again, China opening can be inflationary in US also. So he's saying कि अभी ठहरिए, अभी जल्द मत करिए, अभी काफी देर है, अभी 2 or 3 variables हैं अभी उनको solve करना है. So let's not get ahead of ourselves. But the worst may be behind us, but still we need to wait and see. I think that's what market doesn't want to wait. The bond market is saying कि rates नहीं बढ़ने वाले, शायद 4% पे रुक जाएंगे, 4.5, 4.7 पे रुक जाएंगे. That's what they're saying. But Fed is saying कि, and that was another thing. He said कि we are going to 5% and we might stay there. That was a big good sign. He didn't say कि we are locked into higher rates. We might stay there around 5%. We're going to be data dependent. So काफी चीज positive थे कि he's not saying कि just we're going to stay higher for longer. He's going to be data dependent, stay around 5%, and that clarity is good for the market. So if someone can make a bet based on that, that's good. Before we didn't know how high he was going to go. There were some estimates कि 6% तक भी जाएंगे फेडरल फंड्स रेट, पर अब लग रहा है कि 5 या 5 से कम भी होने वाला है, रुकने वाले हैं. And the market may be right ultimately कि the Fed needs to correct itself. Ultimately, the market may be right.
ऑल राइट, एब्सोल्युटली संतोष, बाजार को क्लैरिटी पसंद है एंड ये जो क्लैरिटी की एक स्टेटमेंट आई भी, उससे बाजारों में एक शेयर भी दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष ये अपडेट, ये हमारे साथ एनालिसिस शेयर करने के लिए और आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो ये तो हुई ग्लोबल मार्केट्स की बात, वहाँ एक रिस्पाइट रैली दिखी, लेकिन